Assalamu alaikum, dear students. Uh, Dear 12th students, you have to remember that in our syllabus of alcohols, phenols and ethers, हमारे पास जो है एक क्वेश्चन जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट भी हुआ है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स विच विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। हमारे पास जो है इनलाइन बहुत सारी टेस्ट्स हैं, वी हैव मेनी टेस्ट्स इन लाइन, लेकिन जो कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बल्कि सारी की सारी बुक स्टफ्स के अंदर जो है यही 3 टेस्ट जो मैंने यहाँ पर लिखे, दैट इज़ ल्यूकास टेस्ट, विक्टोमियर टेस्ट और ऑक्सीडेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो है वेरी ऑफन दे आर बीइंग आउटस्पोकन, या तो क्लासेस के अंदर डिस्कस होते हैं या आपकी बुक्स के अंदर जो है ये अपीयर होते हैं। होप यू आर गोइंग टू keep a keen interest in just taking them while we are going to discuss them. Lucas's reagent is a solution of zinc chloride in concentrated hydrochloric acid. It is a chlorinating agent, replacing the hydroxyl group in alcohols by a chlorine atom. Alcohols are soluble in Lucas's reagent, but the reaction products, chloroalkanes, are not, so they separate from the reaction mixture as a separate layer. Tertiary alcohols react with Lucas's reagent almost instantly, so the solution turns turbid immediately upon mixing the reactants. The reactions of secondary alcohols is slower, and it usually takes several minutes until the solution becomes cloudy. Primary alcohols react so slowly that no change in the appearance of the solution is observed at room temperature. The reaction with Lucas's reagent provides a convenient test for telling primary, secondary, and tertiary alcohols apart. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोग जानेंगे अल्कोहल्स का जो विक्टोमियर टेस्ट होता है उसे कैसे करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस। आइए हम देखते हैं। देखिए, इसका जो विक्टोमियर टेस्ट का सिग्निफिकेंस है, जो इसका यूज है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसका यूज होता है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का इसका रोल होता है। अभी कैसे डिस्टिंग्विश करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल होता है RCH2OH। सबसे पहले इसमें HI का यूज करते हैं, जिससे यहां बन जाता है RCH2I, H2O निकलता है, I आता है। आयोडाइड बनने के बाद I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, इसको रिप्लेस करना आसान है, तो हम सिल्वर नाइट्राइड का यूज करेंगे, जिसमें दिस NO2 विल अटैक हियर एंड रिमूव I को हटाएगा ये, जिससे बन जाएगा RCH2NO2। RCH2NO2 बनने के बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ। एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बाद यहां कोई ऐसी स्पीसी बनती है RCH एंड डबल बॉन्ड NO2। ये जो NO आया है एक्चुअली HNO2 से हमें मिला है। जब इसमें NaOH हम डालते हैं तो सॉल्यूशन बिकम्स रेड कलर्ड, हमें रेड कलर ऑब्जर्व होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जब विक्टोमियर टेस्ट करते हैं व्हाट वी गेट इज रेड कलर। अब जानना है आपको, अगर मैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो क्या फर्क आएगा। तो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कार्बन 2 डिग्री होगा। यही सेम प्रोसेस जब हम यहाँ करेंगे
2 डिग्री अल्कोहल में, we will get blue colored solution. Solution blue color की हो जाएगी. And in the third case, in the case of 3 degree, solution will remain colorless क्योंकि reaction complete ही नहीं हो पाएगी. तो overall what you need to remember कि 1 degree alcohol में जब Victor में टेस्ट करते हैं, we get red colored solution. अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल में टेस्ट करते हैं तो we get is blue colored solution. And the case of 3 डिग्री अल्कोहल we get is a colorless solution. तो ये निमोनिक आपको याद रखना होगा, RBC which will resemble red blood cells, जो आपने हमेशा 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा. इस बेसिस पे you will be able to remember. आइए क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि there is a compound, there is a molecular formula C5H12O. पूछा गया है कि ऐसे X कंपाउंड होंगे, there are X कंपाउंड्स जो विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर ब्लू कलर देंगे, which will give blue color in विक्टर मेयर टेस्ट. तो देखिए कितने ऐसे होंगे. अब देखिए ब्लू कलर अगर दे रहे हैं तो इससे प्रूव हो रहा कि ये जो कंपाउंड होगा इट इज एन अल्कोहल एंड इट मस्ट बी 2 डिग्री अल्कोहल. तो देखिए C5H12O से हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाने होंगे. सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी DBE वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 0. इसका मतलब कंपाउंड के अंदर ना तो कोई पाई बॉन्ड है ना ही कोई रिंग है. अब देखिए 5 कार्बन से अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा जो पॉसिबल होंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर द 3 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो इसमें पॉसिबल है. अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल इसमें बनाना चाहूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल यहां बन सकता है या उसे हम यहां बना सकते हैं या उसे हम इधर बना सकते हैं. और देखिए और किसी भी पोजीशन पे हम 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाएंगे तो टोटल ऑफ 3 अल्कोहल्स आर पॉसिबल which will give positive Victor Mayer test and gives blue colored solution on the reaction. So that this was Victor Mayer test. जिसमें 1 degree alcohol में we get red color, 2 degree में we get blue color, and in the 3 degree we get colorless solution. This is a test to distinguish primary and secondary alcohols from tertiary alcohols. It uses the principle of oxidation. On the left here, I have the primary alcohol, propan-1-ol. In the middle, I have the secondary alcohol, propan-2-ol, a position isomer of the first one. And here to right, I have 2-methyl propan-2-ol, a tertiary alcohol. So 3 colourless liquids. I need a hot water bath for this experiment. And what I'm doing here is carrying out a redox reaction. So here I've got acidified potassium dichromate, orange crystals dissolved in water, and dilute sulfuric acid added. There at the bottom you have the half equation showing that dichromate ions in the presence of acid H+ can take in 6 moles of electrons per mole of dichromate. It is in its orange +6 oxidation state to the left and its dark green +3 oxidation state to the right. So I'm adding acidified potassium dichromate here to the primary alcohol, propan-1-ol. I'll use a rubber bung to give it a good shake and then place it into a hot water bath. Let's consider the structure of propan-1-ol. And in particular, we take a look at the carbon to which the functional group OH is attached. This carbon here. What you find then is if that carbon that's attached to the OH is also attached to at least one H atom directly, and this one here is attached to 2 directly, then it will undergo oxidation. And as a result, it will reduce the dichromate ions from that orange colour to a dark green colour. So the dichromate ions are behaving as an oxidizing agent, which means they themselves are reduced. So here I've now got the secondary alcohol, propan-2-ol, a position isomer of the first. I've added acidified potassium dichromate and using a separate rubber bung to avoid contamination, I've given it a shake.
and into the hot water bath. And here's its structure, and there's the key carbon in question, the one that's holding the functional group OH, and you can see that it is too attached to 1H below there. So the secondary alcohol should also undergo oxidation, so in turn that means it will reduce the orange dichromate ions to the +3 oxidation state, which is dark green. And then I'm taking 2-methyl-propantuol here, which is a tertiary alcohol. Same procedure, adding acidified potassium dichromate, again to avoid contamination using a separate rubber bung. I'll give it a good shake. Although the alcohol is miscible with water and therefore miscible with the aqueous solution of dichromate ions. And into the hot water bath. So let's look at the key carbon, this one. It's holding the functional group OH. And here, very importantly, you can see that that carbon is not attached directly to any H atoms, and as a result will not undergo oxidation. So I expect that this chemical propantuol will not reduce the acidified potassium dichromate. So there you have them in the hot water baths. And I'll speed up what took probably somewhere between 7 and 10 minutes. So propan-1-ol on the left, a primary alcohol. In the middle, propan-2-ol, a secondary alcohol. And on the right, 2-methyl-propan-2-ol, a tertiary alcohol. Mixed with acidified potassium dichromate and placed in a hot water bath. Just topping up the hot water bath here. And again, I have speeded this up probably about ×4. You can see that something's happening in the first and second test tubes. The dichromate is changing colour, heading towards that dark green colour. So already we can see a positive test, so to speak, for propan-1-ol and propan-2-ol. They do reduce acidified potassium dichromate from its orange +6 oxidation state to its dark green +3 oxidation state. We cannot, and I would emphasize that, we cannot use this test to distinguish between a primary and a secondary alcohol, as they both behave the same, reducing the dichromate. But we can use this test to distinguish between a tertiary alcohol and both primary and secondary alcohols. So all that's